Assalamu alaikum student. How are you all? We are fine. Yes. How are you all? We are fine. Alhamdulillah. Okay. So in previous classes we have done like decomposers and all in lesson 1, in lesson 3 and as well. Okay, so today in front of you there is a picture. What you would see in this picture or what you observe in this picture? Do you have any idea? क्या समझ आ रहा है? Yes. Yes, please. Unmute yourself. Miss, this is a picture of a food chain. Okay. How do you know this is a food chain? Miss, there are arrows which are going from small plant, from then animal. Miss, there are steps. Okay. Miss, Okay. Thank you. herbivore. Okay. Miss, Thank you. Okay. Anyone else? Anyone else except Aska? Okay. Abdul Rahman. Yes, Abdul Rahman. Unmute yourself. मिस ये फूड चेन है. Okay. So this is our today's class is about food chain. यही हमारी आज की क्लास है food chain और भी बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं इंशाल्लाह ताला we are going to cover in today's lecture. So unit 1, lesson 2, which is related to food web. As you can see in the picture, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इस picture पे भी the first one is the producer, then consumer, then consumer, then consumer. This is the primary, secondary, and tertiary, and then consumer. Okay. So what are today's topics? Today we are going to learn about food chain, carnivore, scavengers, decomposers, food web. Okay. So what is food chain? Do you have any idea that what is food chain? Anyone from you? Three of you are okay. Yes, Hassan, unmute yourself, beta. मिस फूड चेन एन एनिमल्स की चेन होती है. Okay, animals की chain होती है. Okay. Any specific kind of chain or या किसी भी तरह से animals की arrangement का कुछ होता है या कुछ और कोई comment करेगा? Yes, yes, please, you. Miss, food chain is the path by which energy passes from one living thing to another. Miss, it has three basic steps. Miss, first comes producer. Miss, then Okay. consumer. Okay. Miss, in consumer there are three types. Okay. Yes. Hello. Yes, yes, Aska. मिस Three मैंने types of. मिस मिस मैं अभी मैं कंज्यूमर्स का बताया था. जी जी ओके चलो थैंक यू सो मच. आपका शायद कनेक्शन लॉस्ट हुआ था जिसकी वजह से मैं सुन नहीं पाई बट अस्का शायद ये कह रही थी कि देन कंज्यूमर्स एंड देन आफ्टर कंज्यूमर. चलें लेट्स सी आगे क्या है. Okay, so what is food chain? Food chain is all about energy passes from one living thing to another. As you can see in the picture as well. Do you see the diagram clearly? First of all we have energy, a sun, ठीक है, which gives energy to producer. What are producers? Producers are plants. What are plants? Or plants are called producer because they produce their food by themselves by the process of photosynthesis. Without photosynthesis they cannot make their own food और photosynthesis के अमल की वजह से ही ये जो है अपना फूड रेडी करते हैं और फोटोसिंथेसिस के अमल के बाद जब ये अपना फूड रेडी करते हैं तो फिर फूड चेन में क्या आप ये पिक्चर में देख रहे हैं कि देयर इज अ ग्रास होपर आफ्टर द प्रोड्यूसर एंड ग्रास होपर इज अ कंज्यूमर बिकॉज ये छोटे छोटे प्लांट्स जो है वो खा रहे होते हैं. देन ग्रास होपर को किसने खाया? एक फ्रॉग ने. और देन फ्रॉग को किसने खाया? एक बर्ड ने. दिस इज व्हाट वी कॉल फूड चेन. दिस इज द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन. ये एक दूसरे में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम सन
son to producer, then producer to consumer, consumer से फिर consumer, then tertiary consumer. So this is the chain. Why it is called chain? Because ये connected है with each other. Okay, as you can see, food chains in front of you. There are three linked food chain, जिसमें आप देख रहे हैं कि थ्री जो है लाइक प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड देन टर्शरी कंज्यूमर, आपके सामने सिर्फ तीन जो है वो लिंक जो है एक दूसरे से हुए हुए। कॉर्न को रेड ने जो है वो कॉर्न खाए, और फिर रेड को किसने खाया? आउल ने। देन वी हैव अ फोर लिंक्ड फूड चेन, एंड देन देयर इज a five linked food chain. Okay, as you can see, grass, then grasshopper, frog, python, and then eagle. Okay, इसी तरह से आप भी जो है कोई फूड चेन लिंक कर सकते हो, और मुझे जो है व्हाट्सएप कर सकते हो अपना होमवर्क कि किस तरह से कोई भी फूड चेन, कोई भी एक थ्री लिंक फूड चेन जो है आपने अपनी कॉपी में जो है वो ड्रॉ करनी है। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क, नोट डाउन इन योर कॉपी। You have to write a three linked food chain. आपने या तो सिर्फ नेम्स लिखने हैं, अगर आप ड्रॉ करना चाह रहे हो तो इट्स अप टू यू। ओके ओके, longest food chains are found in the sea, and these food chains start with the microscopic green plants called planktons. As you can see from it, this food chain is start with algae यानी seaweed. ये बिल्कुल स्मॉलेस्ट टाइप के प्लांक्टन्स मतलब कहलाते हैं, और बिल्कुल छोटे छोटे समंदरों के अंदर पौधे पाए जाते हैं। और ये पौधे जो हैं, ये पौधे जो हैं इन्हें स्मॉल फिशेस खाती हैं, और देन ये आपके सामने पूरी चेन बनी हुई है। देन पेंगुइन, देन सी लायन, एंड देन किलर व्हेल। यानी स्मॉल से शुरू हो रही है कहानी, और फिर एक दूसरे के पास जो है एनिमल्स ट्रांसफर कर रहे हैं एनर्जी। सी वेट से यानी प्रोड्यूसर से गई कंज्यूमर में, स्मॉल फिशेस में, देन पेंगुइन ने जो है वो सी लाइन ने जो है वो पेंगुइन को खाया, और देन सी लाइन को किसने खाया? किलर व्हेल ने। और किलर व्हेल जो है वो सब कुछ खा सकती है, सब कुछ जो है वो खा सकती है, क्योंकि ये सबसे बिगर एनिमल है। ओके, और दिस इज longest food chain which is found in the sea, or this is start with a small microscopic green plants which is called plankton. उसे प्लांक्टन कहा जाता है। स्मॉल ये सी में जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, उस सेंडिंग में ओके ओके, अब आवाज क्लियर है मेरी बिल्कुल सबको, या स्टिल यू आर हैविंग अ प्रॉब्लम? ओके, थैंक यू। यस, आवाज क्लियर है या नहीं मुझे बता दें। ओके, चले, थैंक यू सो मच। ओके, then we have carnivores. What are carnivores, by the way? कौन बताएगा? Raise your hand. Okay. Yes. 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 Hassan. Miss carnivorous are animals that eat other animals and meat. Okay. Thank you, Hassan. Yes, Aska. Miss, carnivores are the animals that hunt and they only eat meat. Okay. Okay. Abdul Rahman, is Aska right? Is she right or wrong, Abdul Rahman? Tell me. Unmute yourself. सही है। सही कह रही हैं? Okay. Yes, Abdullah.
Is Abdul Rahman right? Yes, Miss, सही कह रही हूँ. Okay, क्या सही कह रही हैं? Repeat the words. Carnivore, carnivore are those animals they can hunt and make their food with another animal. Okay, thank you so much. Which they hunt other animals for their food. Okay, okay. Let's see what are carnivore. पता चल जाता है अभी. The organisms which eat other animals or meat only. सिंपल से फूड चेन भी मिस एक पहले मिस पहले प्लांट्स होंगे फिर मिस Okay, कैटरपिलर okay. फ्रॉग Thank you so much, Mariam. Okay, anyone else wants to say something? Yes, Aska, unmute yourself. Miss, in this video we have learned about food chains. Miss, we started from the sun, which gives the plants energy. Miss, then the plants are eaten by herbivores or primary consumer. Miss, then comes the secondary consumer or carnivore that eats the herbivore. And miss that in some food chains there comes a tertiary consumer that eats the secondary consumer. Okay, thank you so much, Aska. Thank you so much. Okay, anyone else? Okay, so food chain is clear now. Any questions about food chain? Anyone asked? Anyone have any question about food chain? Yes, Mariam. Do you have a question? Yes, Mariam. Unmute yourself. Yes, please, and Mariam. Mariam, unmute yourself first. Then say something. Yes, मेरा Mariam. क्वेश्चन क्या दूंगा जी जी बेटा, प्लीज पूछें. मिस मैंने पूछना नहीं था मैंने बताना था तो बेटा बता दे, बोलिए. मिस फूड चेन कनेक्टेड होती है और जब फूड वेब होती है वो इंटरकनेक्टेड होती है ओके फूड वेब में ना 3 भी हो सकते हैं एनिमल्स 3 भी हो सकते हैं 4 भी हो सकते हैं ओके और 2 और ओके. फिर Thank you, 5 Mariam. Thank you so much. Very nice of you. Okay, so now we have the another topic, which is scavenger. What are scavengers? Scavengers are consumers. They do not usually kill for their own food. What they do, they just feed off the remains of living things that are killed by other consumers. They do not kill by their own food. ये खुद के खाने के लिए कभी भी जो है वो kill नहीं करते, but they feed off the remains of living things that are killed by the other consumers. What they do, they just eat out the animals or which are already killed. Okay, some of the examples are in front of you. Okay, these are the more examples. Okay, opportunistic animal that feeds on dead and decaying matter rather than hunting live prey. Just remember, they do not kill by themselves for their own food. They just only ate the which killed by the other animals. Okay, now we have a decomposer. What is decomposer? Anyone from you? Anyone from you? Yes. Now I want another one. Please, कोई और comment करे. Mohammed Faik, please बेटे sit properly. Mohammed Faik, 1814864. Sit properly. Thank you. Okay. Tahreem Fatma, unmute yourself if you are listening me. Ali Hassan, do you have any idea about decomposers? No. Okay. Sadi Altaf, do you have?
What are decomposer? Do you have any idea? Okay. जबकि अभी बात भी हुई है. It means that you are not listening carefully. Okay, yes, Abdul Rahman, you want to say something? Okay, yes, please unmute yourself, bete. This decomposer breaks down the organisms. Okay, thank you. Okay, organic matter. Thank you. Anyone else wants to say something more about decomposers or DK? Yes, Aska, unmute yourself. Miss, decomposers feed on the remains of other animals that are buried in the soil. Miss, they take nutrients out of them and give it to the plants, and they play an important role in ecosystem. Okay, thank you so Because if much. there will be no decomposers, the world would be filled with dead bodies, Okay, thank you. and the plants will not get nutrients. Okay, thank you so much, Aska. Okay, so what are decomposers? Decomposers feed on the remains of other animals. Decomposers play an important role, as Aska said, by digesting that matter. They put nutrients back into the soil. Not only nutrients, but minerals also, and water which soil may absorb, and then they make producer. Producer को क्या मिलता है? फिर उससे plants क्या लेते हैं soil से? They just took nutrients, they took minerals, और and then water जो हम डालते हैं. कभी आपने अगर गार्डनिंग वगैरह की हो तो उसमें भी ये प्रोसेस जो है रिपीटेडली आप कर रहे होते हैं, जबकि आपको पता भी नहीं चलता है किस तरह से उन्हें जो है बहुत सारी चीजें मिल रही होती हैं. मिस, आप मुझसे पूछती ही नहीं. नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं. अब्दुल्ला, आप चलें, अब्दुल्ला का कमेंट सुनते हैं. अब्दुल्ला क्या बात कर रहे हैं? यस अब्दुल्ला, अनम्यूट योरसेल्फ. अब्दुल्ला की शिकायत दूर की जाती है. यस. Decomposer are Yes. an organism that consume and break down Yes. the dead organism and break down Okay. the dead organism or waste matter into simple substances. ओके, थैंक यू सो मच. ऐसा लग रहा है याद है अब्दुल्ला को पहले से ही. अब्दुल्ला, आइडिया था या याद किया है, पढ़ा है पहले से? मिस, याद किया हुआ है. याद किया हुआ है. अरे वाह, वेल डन, गुड. Okay, so what decomposers do? Decomposers feed on the remains of other animals. What are other animals? Like those who were killed by other animals, और उनके जो भी remains हैं जो उन्होंने खा पी के छोड़ दिया, या कुछ भी in forest they have in forest मतलब they have a lot of things जो remainings होती हैं. वो plants भी हो सकते हैं, वो animals भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो what decomposers do, they just feed on the remains of other animals, and then what they do, they do an important role, they play an important role in the ecosystem. Okay, so now we have the difference between the detritivore versus decomposers. What are the detritivore? Detritivore eat the remains of dead plants and animals. Examples are crabs, mites, earthworms and snails. क्या करते हैं डेट्रिटिवोर? जो रिमेन्स होते हैं प्लांट्स और छोटे छोटे एनिमल्स के, लाइक क्रैब्स, माइट्स, अर्थवॉर्म्स और स्नेल्स वगैरह. माइट्स जो होते हैं ना, वो भी छोटे छोटे से लाइक इंसेक्ट टाइप का एक होता है. अगर पिक्चर होती तो मैं आपको जरूर शो करती इंशाल्लाह ताला. I'll show you the picture of mites in next class inshallah. So, and then what are the decomposers? Decomposers break down organism or organic matter and feed on it, like bacteria and fungi. Okay, these are the examples of it. Okay, here is a mite, as you can see in the picture. These are detritivore or decomposers. Yes. Miss, unmute me please. Okay, Amna. Where is Amna? Amna. Yes, Amna, unmute yourself. इसे हम पिछला क्यों पढ़ रहे हैं? आमना, बिकॉज काफी सारे स्टूडेंट्स जो थे ना वो प्रेजेंट नहीं थे, दैट्स व्हाई वी आर रिपीटिंग. मिस, मैं थोड़ी लेट आई थी तो शुरू की स्लाइड वही थी.
बेटा देन फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनल टेक्स्ट कर लीजिएगा, आई विल गाइड यू. ओके. Okay, so after that we have what? We have a food web, which is slightly different from food chain because it is interconnected with each other. अब उसमें क्या था? In food chain first we have producer, then consumer, and then मतलब वो एक कनेक्टिविटी के साथ जो है वो एक फूड चेन जो है वो चल रही थी. And then in the last we have decomposers in food chain. But in food web में अब आप देख रहे हैं कि आउल जो है वो रेबिट भी खा रहा है, रेड भी खा रहा है, एरोस देखिए, और स्नैक जो है वो आउल आउल जो है वो स्नैक भी खा रहा है, और रेड को स्नैक जो है वो रेड को भी खा रहा है, फ्रॉग को भी खा रहा है, और सारे बहुत सारी चीजें. ग्रास होपर जो है वो फ्रॉग जो है वो ग्रास होपर को खा रहा है, और ग्रास होपर किसे खा रहा है? प्रोड्यूसर, मतलब प्लांट्स खा रहा है. मतलब दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर. दिस इज व्हाट वी कॉल food web. Okay, in food chain we have producer, consumer, and then decomposers. ठीक है, वो एक चेन थी बकायदा जो बनी हुई थी, बट फूड चेन इज नॉट इंटरकनेक्टेड, वो इंटरकनेक्टेड नहीं है. बट इन फूड वेब ये पूरी इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से. ठीक है. ओके. Okay, in nature, each organism may obtain food from more than one trophic level. So food chains are found interconnected and usually form a complex network known as food web. Okay, food web is a network of food chains. Food web जो है वो network है पूरा एक food chains का. ये सारी food chains जो है वो जब आपस में मिल जाती हैं तो they become food web. In food web, organisms have a number of options of eating and being eaten by each trophic level. Okay, as you can see in the picture, a food web shows the transfer of energy within an ecosystem. Energy is transferred between organisms when one organism eats another. Okay, another example for you people. Significance or importance of food chain and food web. It plays significant role in energy flow and nutrients cycling. Without it, it is impossible. ये cycling हो ही नहीं सकती है क्योंकि food chain और food web में decomposers का बहुत बड़ा अमल दखल है, और decomposers की value हम previous lesson में भी पढ़ चुके हैं. Maintain ecological balance और stability of the ecosystem. पूरा ecosystem इस पर depend कर रहा होता है. विदाउट इट प्रोड्यूसर्स नहीं होंगे तो फिर किस तरह से आगे होगा. हमने कल भी जो ये बात काफी डिटेल में पढ़ी थी. बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ऑफ सम केमिकल्स, ये सारा केमिकल प्रोसेस ही होता है एक तरह से जो आगे बढ़कर पूरे इकोसिस्टम जो है हमारा इसी पे डिपेंड करता है. ओके, नाउ वी हैव द डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब. in food web, in food chain, it is a single pathway. Energy flow का एक single pathway था, but in food web, it is a complex network of food chains which is interconnected with each other. This is a very food chain is a very straight way, but in food web, this is the food web is very complex. Okay, number of pathways are one by one connected होते हैं ना, but food web में many connections हैं. Number of organisms included very few. In food chain and food web, there is a lot of, or there are many types of organisms which they are included in food chain. बहुत easy है. अगर आपने टॉपिक समझा हुआ है तो you no need to like रट्टा कोई लगाने की इसकी नीड ही नहीं है आपको. आपने सिर्फ अपने माइंड में एक आप फूड चेन को ध्यान में रखेंगे, आपने उसका अपोजिट फूड वेब को फिर जहन में लाना है, और you can write by it yourself. Okay, so here's a homework for you. These are the questions which you have to do in lesson number 2. Okay, question number 1. How many seashore food chains can you think of? अच्छा, फूड चेन्स जो थी वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो लैंड नहीं होती है बल्कि सी में भी होती हैं. जो हमने भी पढ़ा था लॉन्गेस्ट जो है वो फूड चेन जो है वो सी में ही होती है. तो आपके जहन में और क्या जो है वो लॉन्गेस्ट हो सकती है. ठीक है. Number 2, collect the pictures of different scavengers and decomposer and paste it in your
copy. Question number 3, what is food web? Question number 4, difference between food web and food chain. Question number 5, write significance of food web and food chain. Write down these food chains in a correct order. You have to do all the homework in your copy. Okay, students? May I repeat the questions? Okay, so anyone from you जो review करे? Anyone from you? Okay, अब किससे करें? फिर डरास होते हैं आप लोग के मुझे आप अनम्यूट नहीं करती. ओके चले रैंडमली कर लेती हूँ मैं किसी को भी. अब किसको करूँ? कौन जो है? चले 2 से 3 स्टूडेंट से ले लेते हैं रिव्यू. यस आमना प्लीज. मिस मुझे आपसे कुछ पूछना था. आमना इन चैट बॉक्स, आप चैट बॉक्स पे सवाल ड्रॉप कर दें क्योंकि मीटिंग टाइम एंड हो जाएगा, या फिर पर्सनल व्हाट्सएप पे. ठीक है, अभी रिलेटेड टू टॉपिक रहना है हमें. ठीक है, आप मुझे चैट बॉक्स में भेज दो या फिर मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे करो. ओके, टॉपिक से रिलेटेड आपने रहना है अभी. यस कौन करेगा? आप 3 के हाथ उठे हुए, अब्दुल रहमान, अस्का एंड अब्दुल्ला. जल्दी से जिसने पहला हाथ उठा लिया उसको मैं अनम्यूट कर दूंगी. अभी उठा हुआ है, असली वाला हाथ उठाना था. यस अस्का ने उठा लिया. जी अस्का. Miss, today we have learned about food web and food chain. Okay, in detail. Miss, Okay. in detail. Miss, in food chain there are Shortly, first Asta. comes Miss. First comes the producer, which is the plant. Miss, then the herbivore, the animal which eats the plants. Miss, then the carnivore, which only eat meat and hunt the herbivores. Okay. And Miss, then tertiary consumer, which Miss eats the secondary consumer. Okay, thank you so much, Aska. And Miss, food web के बारे में बताऊँ या? नहीं, I think it is enough. Thank you, bete. So, you have noted down the homework. So this is all about today's class. We have learned the topic which is related to food web and food chain, scavengers, and a lot of the topics we have covered today. So that's all for today. If you have any queries, just ask me on WhatsApp on my personal number. Till then, inshallah ताला कल की क्लास जो होगी वो हमारी different होगी. So कल की क्लास में आपसे मिलते